so I'm Manveer Waghela, and I'm the owner of the property. This resort is called the Kutch Safari Resort, and we've been running this place for a good 35 years now. So जब हमने शुरू किया था तब तो there was hardly any tourist and tourism in this region. So we are the old hand in this. And the beauty of this location or this place is what you see on the right hand side. This is the reservoir part of Rudramata Dam. तो यहाँ पे आगे लेफ्ट में there is a dam जिसका ये catchment area है. And this is the biggest freshwater source for the villages ahead for irrigation. Is this freshwater lake? Yes. So there is all the water during the monsoon trickles down and gets accumulated here. And there's a dam there so that it serves the purpose during the summers and during irrigation requirement. मुझे लगा कि ये वही salted lake वैसा नहीं ये प्रॉपर फ्रेश वाटर है, बट इसमें भी जब पानी सूख जाता है पूरा तो यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ saltness और हार्ड मिनरल्स बिकॉज मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर वाज अफेक्टेड. अगर आप बीच में देखें तो वहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ लोकल फिशरमैन जो यहाँ पे अपनी फिशिंग कर रहे हैं. द हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस इज़ द ब्यूटी एंड द सेरेनिटी. अगर आप कोई बॉक्स होटल चाहते हैं तो यू कैन बी एनीवेयर इन द सिटी, बट इफ़ यू वांट टू बी कनेक्टेड टू द नेचर, इफ़ यू वांट टू एंजॉय अ गुड फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, देन दिस इज़ द प्लेस. ये जो कॉटेजेस आप देख रहे हैं, these are called the Kutchi AC cottages, and ये यहाँ दोबारा बताना. these are called the Kutchi AC cottages. Kutchi. Yeah, that's the name that we've given to the cottages. It is also referred to locally, इनको भूंगा बोला जाता है. भूंगा गांव में अगर आप जाएंगे तो इनको भूंगा बोला जाएगा. ये thatch roof पे बने होते हैं, और the reason why they are in thatch roof concept is ये सर्दियों में थोड़ा सा रूम को गर्म रखते हैं और गर्मियों में इंसुलेशन करके ठंडा रखते हैं. तो लोकल विलेजेस ने जब बनाए होंगे अपने घर तो उन्होंने ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के किया था. उस टाइम पे भी गाइस साइंस एक्चुअली वर्क्स कि उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया होगा. सो ही इज आवर मैन. ये बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स लेते हैं. हाय मानवीर. हाय तरुण. आई होप यू लाइक द प्लेस व्हेन यू केम. आप लोग आए होंगे तो आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये लोकेशन ही ऐसा होगा. मेरे को पता भी नहीं था. मैंने सिर्फ पिक्चर्स में ना एक्चुअली हट्स देखे थे. जी. सिर्फ उतना ही दिख रहा था मुझे. इन फैक्ट दैट्स द रीज़न आप बड़े काम के हैं, बिकॉज मुझे जो एक फीडबैक सब देते हैं कि योर फोटोग्राफ्स डोंट डू जस्टिस टू द प्लेस, बिकॉज मेरे अधिकतर फोटोग्राफ्स आर क्लिक्ड फ्रॉम दिस एंगल, वेयर एज द लेक गेट्स मेस्ड अप. कि अगर मुझे लेक का लेना है और लेक के उससे लेना है, then drone is the reason, only way I can capture the lake as well as the cottages.
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, बिकॉज ऐसे रॉ स्टेज हम लोग हमेशा अपने वीडियोस में लेकर आते हैं। जनरली लोग होटल्स को, रिजॉर्ट्स को वैल्यू करता है, दिस इज़ फाइन, बट हमें ऐसे स्टेज भी एक्सप्लोर करने चाहिए जो नेचर के बहुत करीब है। और यहाँ से आप देखो पूरी लेक के पास ये रिजॉर्ट बना हुआ है, इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लग रहा है यार।